Good morning, dear students. How are you? I hope you will be fine at home. Today we will discuss new chapter, political parties. You know very well, political parties are the most visible institution in a democracy for the ordinary citizens. Political party यानी कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. तो फॉर नो दैट आंसर, गेटिंग दैट आंसर, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द what do you mean by political parties, what are the three components of political parties, and what are the various functions performed by the political parties. Firstly we will discuss about the what do you mean by the political parties. Political parties means political parties is a group of people who comes together. यानी कि group of people है, what they are doing, which function they are doing, which comes together. For which purpose? To contest the elections. To contest the elections, it means if they will contest the elections, what will be happen after that? Those party will get the majority. Automatically that party will form the government. Clear? So what do you mean by the political party? Political party means is a group of people who comes together. For which purpose they are coming together? To contest elections and hold power in the government. Hold power in the government means they form the government and they agree on some policies and programs for promoting national interests. Every political parties is having some policies and programs so they can do work for the welfare of the nation. Clear? Now parties, what do you mean by parties? What they are doing nowadays? Parties, why some parties are saying they try to persuade people. Persuade का मतलब agree करना कि किसको एग्री कर रही है? पीपल. कि वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर पार्टीज. नाउ डेज पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्टली व्हाट दे आर डूइंग, दे ट्राई टू परसुएड पीपल कि वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द अदर पॉलिटिकल parties and they seek to implement their and how they will implement their policies. Every political party is saying कि our policies and programs is better comparatively to the other political parties. So now how they implement these policies and programs? By winning popular support. And how they will gain the popular support? With the help of elections. When people will cast their vote, it means how they will implement their policies? By winning popular support. And how they will get the popular support? Through the elections. When people will cast their vote, it means particular party will form the government, यानी कि they will get the majority. So that's why political parties implement their policies. If I am saying कि for example, I am belongs to any one particular party and I am saying कि I am having these programs and policies. My policies and programs are better यानी कि good comparatively to the other political parties. But how I will implement my policies and programs? It means by winning popular support. इसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? Elections. यानी कि election is a process through which people choose their representatives. Or those representatives we will choose, they will form the government. यानी कि through one particular party we are choosing the representatives, or those party will get the majority, they will form the government. Clear? Now political parties reflect a fundamental political divisions of a society. How the political parties किसका reflection है? Fundamental political divisions of a society. Parties are a part of the society and thus involve partisanship. What is the meaning here of partisanship? का मतलब क्या है? यहाँ पर political parties क्या कर रही है? मतलब partisanship तो is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. How we can say that? यानी कि political parties have different views on what is good for all. आपका किसी पर्टिकुलर पार्टीज के लिए अलग व्यू हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है सोचने की. मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नेगेटिव भी सोच सकती हूँ और पॉजिटिव भी सोच सकती हूँ. तो इसमें इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक ए साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक बैलेंस व्यू ऑन एन इश्यू. यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल एंड ट्राई टू परसुएड पीपल. और इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टीज किसको परसुएड कर रही है? पीपल को, कि वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स. तो थस पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी. इसलिए कहे पार्टी किसका पार्ट है? एक सोसाइटी का.
और उसमें क्या है, पार्टीशनशिप को इन्वॉल्व किया, एक टेंडेंसी को, बिकॉज एवरी पर्सन इज हैविंग द डिफरेंट व्यूज पर्टिकुलर रिगार्डिंग एनी वन पर्टिकुलर पार्टीज। हम सभी के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं पर्टिकुलर पार्टी को लेकर। एक आध वर्ड आपका आएगा इसमें, पार्टीशन। पार्टीशन मतलब ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। ग्रुप बोल सकते हो या फैक्शन, यानी कि पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड का मतलब क्या है कि हम इसको यहाँ पर बोलते हैं कि ब्लाइंड फॉलोवर्स, अंधाधुंध। जैसे कहा कि मुझे तो कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी में ही यकीन है, चाहे उसमें नेगेटिव पॉइंट ही क्यों ना हो, यानी कि सपोर्टर कमिटेड हो गया कि मैं तो इस पार्टी के लिए ही कमिटेड हूँ, चाहे ये अच्छा करे मेरे लिए बुरा करे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ध्यान में रखकर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन? ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। क्लियर? नाउ दीज आर द थ्री components. What are the three components of a political parties? The leader, the active members and the followers. यानी कि a political party has three components. What is the meaning of here the leader? Leader का meaning यहाँ पर क्या है? Every political party has some prominent leaders. Prominent का मतलब important leader, main leaders. And what they are doing here? Who formulated policies and programs of the party and choose candidates for contesting elections. यानी कि who will decide? हमारी कंट्री के अंदर जैसे यूएसए में तो सपोर्टर्स एंड फॉलोवर्स आर चूजिंग देयर कैंडिडेट्स, बट इन आवर कंट्री who is deciding who will contest the election? Our top most leader, यानी कि who formulate the, यानी कि जो लागू करेंगे which policies and programs will be adopted for that particular parties. Clear? What is the meaning of here the leader का मतलब क्या है? Every political party has some prominent का मतलब important leaders who formulated policies and programs of the parties and choose candidates for contesting elections. I hope you clear the leader. Now second, the active members, जिसको हम सक्रिय कार्यकर्ता बोल सकते हैं। Active members का क्या रोल है? They are involved in different committees of the party and participate directly in their एक्टिविटीज, यानी कि जो लीडर्स जो कर रहे हैं उनका काम करवाने का, उनकी पूरी पॉलिसीज प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाने में कौन हेल्प करेंगे? द एक्टिव मेंबर्स। दे विल हेल्प इन ईच एंड एवरी पॉइंट। द फॉलोवर्स, थर्ड कंपोनेंट क्या है? द फॉलोवर्स। दे बिलीव इन द पार्टीज आइडियोलॉजी एंड सपोर्ट द पार्टी बाय कास्टिंग देयर वोट्स इन फेवर ऑफ द पार्टी एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। फॉलोवर्स कौन है? जो सपोर्टर, यू कैन से दैट, यानी कि वी बिलीव इन वन पर्टिकुलर पार्टीज आइडियोलॉजी। जैसे मुझे कांग्रेस पार्टी में विश्वास है या मुझे बीजेपी में विश्वास है, आम आदमी पार्टी में विश्वास, तो व्हाट आई विल डू? आई विल कास्ट माई वोट, यानी कि जो भी फॉलोवर्स है दे विल कास्ट देयर वोट। क्लियर? आई रिपीट अगेन, द फॉलोवर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोवर्स? दे बिलीव इन द पार्टीज आइडियोलॉजी। कौन होते हैं? जो पार्टीज की आइडियोलॉजी, जिनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में बिलीव करते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे आर डूइंग हियर? एंड सपोर्ट द पार्टी बाय, और कैसे हम पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं? बाय कास्टिंग देयर वोट्स। दे आर कॉल्ड द फॉलोवर्स। तो क्लियर? विच हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द पॉलिटिकल पार्टीज? 3. द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड द followers. Clear? We have discussed here up to here. What do you mean by political parties? You will explain. Political parties is a group of people who comes together to contest the election, then who hold the power in the government. Clear? And they agree on some policies and programs for promoting national interest. Nowadays, every political parties try to persuade people why their policies and programs are better than the other political parties, and how they will implement their policies and programs by winning the support of the people, or how they will win the support of the people through the election. You know very well election. Election is a process through which we choose our representatives. Clear? Now parties are a part of the society and thus involve participships. Participships means we are having the different views on a one particular party. Some is saying that political party is good, someone is saying that political party is good, some is saying other political party is not good. यानी कि every political party is having the positive and negative aspect. तो यानी कि that is marked by tendency to take a side and inability to balance views on an issues. फिर हमने डिस्कस किया पार्टीशन, यानी कि पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फंक्शन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड फॉलोवर्स. जो कुछ हो मुझे तो इसी पार्टी के प्रति अपने आप को क्या करना है, समर्पित करना है.
So, and what are the three components? The leaders, the active members and the followers. Now, functions of political parties. Now we will discuss about the functions of political parties. First, parties contest elections. What is the first function of the political parties? Parties contest elections. How? In most democracies, elections are contested mainly among the candidates put up by the political parties. यानी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो हम क्या कंटेस्ट इलेक्शन करवा सकते हैं? क्या इलेक्शन होंगे? नो. विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स हाउ वी विल कंडक्ट द इलेक्शंस? एंड आफ्टर दैट पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज. एंड हु इज सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स? यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्टिंग देयर कैंडिडेट्स, बट इन सम कंट्रीज सच एज USA. In USA, who is selecting the candidates? यानी कि members and supporters of a party choose its candidates. यानी कि USA में candidates को कौन choose कर रहा है? Supporters and followers. You can say that. Now more and more countries are following this method. In other countries like India, in our country, India, who is यानी कि top party leaders choose candidates for contesting elections. यहाँ भी हमने डिस्कस किया था लीडर का मेन रोल क्या है हमारे यहाँ पर? They are contesting यानी कि contesting. What they are choosing? They are choosing the candidates for which purpose? For contesting elections. So clear? What is the first function of the political parties? Parties contest elections. सबसे पहला काम है political parties का election करना. Parties यानी कि elections के लिए खड़े होना. और इसके लिए हमें किसकी requirement होगी? Candidates की. Second, declaration of policies. How we say that declaration of policies? कि political parties are fulfilling all the policies and programs. There are always some socio-economic and political issues before the nation at the domestic and international level. हर country के अपने social, political, economic issues हैं. And political parties put their forward their concerns, views and policies before the people and suggest way to tackle the issues. यानी कि हर political parties अपना डिस्कशन करती है, डिबेट करती है कि हाउ कैन वी टैकल दीज इश्यूज, यानी कि हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हाउ कैन वी टैकल यानी कि हाउ कैन वी सोल्व दीज इश्यूज. एंड यूजुअली पार्टीज हैव देयर रिसर्च विंग्स टू गाइड देम. नाउ थर्ड, मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन. The parties stimulate the interest of public in the issues before the nation. They use all means of mass communication. Mass communication का मतलब क्या है? They are using for that press, the radio, the television also, newspapers, including the street corner meetings also. And after that, in this way, political parties try to educate, influence and mold public opinion in their favor. और लोगों को try करती है कि why our policies is better than the other political parties. और political parties are significant agency, यानी कि political parties are playing the important role for molding public opinion. और for that purpose they are, which method they are using? They are using the mass communications. Now to form and run the government, यानी कि और political parties के क्या function है? To form, government बनाएंगी after contesting the election, and run the government. Formation of government is one of the aims and functions of a political party. ये तो भाई हर political parties का मेन एम है कि गवर्नमेंट को फॉर्म करना और उसको रन करना. नहीं तो क्या ऑब्जेक्टिव है इलेक्शंस का? नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं अगर हम गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं कर रहे और उस गवर्नमेंट को रन ही नहीं कर पा रहे हैं तो. एंड आफ्टर दैट, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर बिकम्स द पावर प्राइम मिनिस्टर एंड बी अपॉइंट्स and he appoints the other ministers in his cabinet. जो पार्टी मेजोरिटी आएगी वो अपने में से अपने क्या चूज करेंगे? लीडर, जो प्राइम मिनिस्टर होगा. और प्राइम मिनिस्टर उसके बाद किसको चूज करेंगे? COM, यानी कि अपना बाकी के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को. और कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट. और एडवाइस कौन देगा इस चीज के लिए? प्राइम मिनिस्टर्स. डिसीव रोल इन मेकिंग, फॉर विच पर्पज? डिसीव रोल इन मेकिंग लॉ. Deceive यानी कि they are playing the important role in making the laws. How?
फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर्स, यानी कि जो भी हम लॉ बनाते हैं कहाँ पर पास होते हैं, इन द लेजिस्लेचर्स, यानी कि विधानसभा में पास होंगे. And after that, but since most of the members belongs to a party, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinion. यानी कि all the topics discussed here in the, and they are playing the important role for making the laws for the country. Role of opposition. Opposition का मतलब क्या है? They are the part of the legislatures. They are the part of the legislatures but not the part of the government. How they are playing the role of opposition? And those party will get the majority, they will form the government, or those party will not get the majority, it means that party will play the role of the opposition. And what is the role of the opposition here? Because opposition parties is raising the issues and criticizes the ruling party ki why you are raising that particular issues, your program and policies is not better for the welfare of the people, यानी कि they are raising the questions, यानी कि तो role of oppositions to the parties in power by voicing different views and criticizing government, यानी कि criticize करते government को, for which purpose? For its failure or wrong policies. अगर कोई ruling party wrong decision लेती है किसी policies पर, तो उसके ऊपर कौन questions मार कर सकता है, कौन questions raise कर सकता है? Opposition party. They are playing the role of the opposition. And opposition parties also mobilize opposition to the government. यानी कि तो you know what is the role of the opposition? Clear? Now access to government machinery and welfare scheme. यानी कि how the parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments. For an ordinary citizens, it is easy to approach a local party leader than a government ऑफिसर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पहुंचने की बजाय जो ऑर्डिनरी सिटीजन है इंडिया का कहाँ पहुंचना ज़्यादा अच्छा समझता है? कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास ज़्यादा इजीली समझता है. तो दैट इज वाई दे फीड क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डोंट फुली ट्रस्ट देम. तो पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स. तो पार्टीज भी क्या करेंगी? जो लोगों की डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करेंगी. अदरवाइज व्हाट विल बी हैपन इन नेक्स्ट इलेक्शन? What will be happen? They will lose the elections if they will not do work for the welfare of the people, ordinary people. तो किसके पास में पावर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? पीपल इज हैविंग ऑल द पावर्स इन देयर हैंड. If that particular political parties is not doing the work according to the people's wishes, needs and their requirements, so it means in next election they will not cast their vote to that particular party, or that party will lose the elections. So dear students, we have discussed the functions of the political parties. First, parties contest elections. Second, declaration of policies, programs and policies. Who will form program and policies? Political parties. Molding public opinion, यानी कि जो लोगों का opinion है उनको कौन shape देगा? Political parties. And to form, or after the contesting elections, they will form the government and run the government and deceive role in making laws. यानी कि for if we are making any laws for the our country, so who is playing the important role for that? Political parties. That is the important work functions of the political parties. And political parties is also playing the role of the opposition also, and access to government machinery and welfare schemes. Now we will discuss about why do we need, what is the necessity of political parties. Necessity of political parties, यानी कि why the political parties are necessary in a democratic form of government. Political parties are a must in a democracy, यानी in a democratic form of government political parties must होनी चाहिए. If there are no political parties, what will be happen? No one will be responsible in running the government. If there is no political parties, then who will form the government and how we will run the government? So the necessity of political parties can be imagined by a situation without parties. It means without political parties we cannot imagine in a democratic form of government. How? Every candidate in the elections will be independent. Independent का मतलब
मैं भी इलेक्शंस के लिए खड़ी होंगी, आप भी खड़े होंगे जिनकी एज अबव 18 है, यानी कि सभी कहेंगे मैं अब क्यों ना अपने आप को चीफ मिनिस्टर बना लूँ, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर. तो इट मीन्स एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल. हाउ वी विल मेक द प्रोमिसेस टू द पीपल, कैसे हम लोगों से प्रोमिसेस करेंगे, क्योंकि मैं तो अपने लिए खड़ी हो रही हूँ, अपने लिए प्रोग्राम पॉलिसीज बना रही हूँ, अपने लिए बेनिफिट करूंगी. तो देन हु विल डू द वर्क फॉर द वेलफेयर एंड make any promises to the people about any major policy changes. But if there is political parties, so now what they are doing, they are making the policies and programs. If they will not do the work according to the policies and programs, so automatically in the next elections we will not choose that particular party. So yani ki if there is no political parties, so what would be happen, every candidate in the elections will be independent, independently लड़ेंगे सभी. तो no one will be able to, कोई किसी से promise ही नहीं कर पाएगा any promises to the people about any major policy changes. Second, the government may be formed, हो सकता है गवर्नमेंट बन जाए, but its utility will remain uncertain. uncertain मतलब कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं है. अब हमारे कम से कम ये है तो कि पर्टिकुलर टाइम है कि भी हम जनरल इलेक्शंस, हमारे बाई इलेक्शंस है, मिड इलेक्शंस है, तो पता कि पर्टिकुलर कुछ टाइम है हमारे पास फिक्स है. वैसे तो जनरल इलेक्शन के लिए फिक्स टाइम है आफ्टर 5 years, बट the government may be formed without political parties, but its utility will remain uncertain. uncertain means not fixed period. Elected, why we are saying कि not utility but its utility will remain uncertain, because elected representatives will be accountable. What is the meaning of accountable? Answerable to their constituencies. Approximately how many constituencies we are having? 543, or from each constituency we are choosing one MLAs या MPs. तो यानी कि ईच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी. कम से कम वो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स या जो हमने चूज किया लीडर, वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि अपनी लोकेलिटी के लोगों को ध्यान में रखेगा कि मैंने इन लोगों से क्या प्रोमिस किए हैं. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द गवर्नमेंट विल बी रन. इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज, then who will be responsible, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एंड फॉर हाउ द कंट्री और कंट्री कैसे चलेगी. हम सब अगर नहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे तो व्हाट वी विल डू, वी विल डू वर्क ओनली फॉर आवर सेल्फ. कल अपने सेल्फिश के लिए काम करेंगे हम लोग. तो यानी कि कंट्री का तो उसमें कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ है, सब अपना अपना स्वार्थ देखेंगे उसमें. तो हमने 2 पॉइंट किए. नाउ वी विल डिस्कस द वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन. जहां पर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन है तो वहां पर क्या हालत होती है. आप इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो द पंचायती इलेक्शंस. इन द पंचायती इलेक्शन देर इज नो पार्टीज, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है वहां पर. तो व्हाट हैपन, द पंचायत इलेक्शंस आर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. यानी कि जो हमारे पंचायत इलेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. आफ्टर दैट द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट formally. It is generally noticed that the village gets split into many more than one group. आप देखो ड्यूरिंग द पंचायत इलेक्शंस गांव हमारे कई ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं उसके लिए कंटेस्टिंग इलेक्शन के लिए. तो ईच ऑफ विच पुट्स अप इट्स अप ए पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट. हर कोई अपने ग्रुप से कैंडिडेट खड़ा करना चाहता है उसमें. तो उसमें गांव क्या हो जाता है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स. एंड द अबोव एग्जाम्पल स्टेट्स एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज. यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि जो एग्जाम्पल हमने देखा कि इन द पंचायती इलेक्शन देर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, विलेज डिवाइडेड यानी कि गेट स्प्लिट इनटू मैनी पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स, एंड आफ्टर दैट ईच ऑफ विच पुट्स अप ए पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स. तो द अबोव एग्जाम्पल states exactly what the party does. And after that, that is the reason the political parties are in almost all countries of the world, whether the countries are big or small, old or new, developed or developing. हम देखें आजकल सभी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कंट्री छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे विकसित हो रही है चाहे विकास हो चुका हो वहाँ पर, और स्मॉल हो चाहे बिग हो चाहे ओल्ड. दे नीडेड ए मैकेनिज्म्स, यानी कि उनको एक प्रोसेस चाहिए टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के. देन हु विल सपोर्ट, मैकेनिज्म क्या है वो, एक पॉलिटिकल पार्टीज. मेक पॉलिसीज with the through the help of the political parties we can frame the policies and programs and justify or oppose them. अगर लगता है कि कोई policies and programs good है तो उसको हम justify कर सकते हैं, yes it is good, और अगर कोई हमारे लिए bad है तो हम उसको oppose कर सकते हैं.
with the help of the opposition party. And then who is playing the role for that purpose? It means political parties are playing the important role in a democracy. It means political parties fulfill these needs that every representative's government has, and thus political parties are a necessary conditions for a democracy. So that's why political parties are necessary in a democracy. So dear students, we have discussed about the what is the necessity of political parties. Political party system. Now we will discuss the political party system. The different countries around the world of different party system, यानी कि all over the world different countries they have adopted the different political party system. So this political party system can be divided into main three categories: one party system, two party system, and multi-party system. Firstly, we will know what do mean by one party system. One party understood यानी कि only one party system. It means in this party system only one party is allowed to control and run the government. And you know very well what is the example? China. And which party mean there? Chinese Communist Party. So clear? In this party system only one party system is allowed and run the government, or only one party system, or what is the example? China. This system is not good option for democracy. An ideal democratic system must allow at least two parties to compete. So in the China only one party system is there. So can we say that China is a democratic country? No, because people didn't have the real choice. They are having only one party, so it means automatically they will give they will cast their vote to only one particular party. So it means it is not a good option for a democracy. And for a democratic election, at least how many options? At least two options should be there. And an ideal democratic system must allow at least two party systems to compete. This provides a fair chance for competing parties to gain power. अगर two party system है तो एक हमारे पास choice है कि if one party is not doing good work, तो it means we can cast our vote to the second party. Clear? Now two party system, यानी कि in the two party system two parties are there for contesting the elections. It means in this party system two parties have a serious chance to win majority and form government. The power really changes between two main parties. And which are the example of two party system in which country? USA, United States of America, UK, United Kingdom. These countries are having the two party system. Now multi-party system. Multi-party system means in this party system more than two political parties contest elections to gain power. For example, India. We have adopted the which system of political party? Multi-party system. In India, there is a multi-party system with more than how many political parties are registered? Approximately more than 750 political parties are registered by the election commission. कहाँ पर हमारे 750 political parties register है? Election commission के द्वारा. But only a few parties are in a race to the elections and form government. Not all the parties contesting the election, only few parties. Only few parties are in the power. यानी कि elections के लिए खड़ी होती हैं, are race to win the election and form the government. This system often appears very complex and leads to political instability. इसे कहता है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, पॉलिटिकल अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता. And it also allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. So we have discussed about the political party system, one party system, two party system, multi-party system. And what is the example of one party system? China, two party system, USA and UK, or multi-party system, more than two political parties to contest the elections to gain the power. For example, India, how many political parties are registered by the election commission? Approximately 750, more than. Now coalitions of parties. Coalitions of parties का meaning क्या है?
In India, government is formed by various political parties coming together in a coalition. Coalitions का मतलब क्या होता है? After the elections, when no party gain the majority. After that, after the election, when 2 or 3 parties come together and they form the government, this system is known as the coalition government. When several parties in a multi-party system, और कई बार क्या होता है, before the election, यानी in a multi-party system, join hands for the purpose of contesting and winning elections, it is called alliance or front. Difference है, coalitions का मतलब कहता है after the elections, when no party get a majority, when 2 or 3 parties coming together and they form the government. और alliance का मतलब कहता है before the elections, when 2 or 3 parties joining hands for which purpose? Contesting and winning the election. Clear? Approximately major alliance in 2004 parliamentary elections, NDA, National Democratic Alliance, that is led by mainly which party? BJP. UPA, United Progressive Alliance, that party mainly led by Congress. And third, Left Front. How many alliances are there in India mainly? 3, NDA, UPA and Left Front. Clear? What is the difference between coalitions government and alliance? Coalitions का मतलब कहता है after the elections और alliance का मतलब before the election. Now ideal party system, how can we say that कि one party system is good, two party या multi party system? It cannot be judged that which party system is the ideal one. हम ऐसे कोई जज नहीं कर सकते खाली की ideal one as party system cannot be chosen. It evolves over a long time. धीरे धीरे डेवलप हो रही है. Depending on the nature of the society, its social and regional division. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि which party system is good? Nature of the society, कि वहाँ का social, economic और geographical condition कैसा है. जैसे we can take example for our country. India has multi-party system. Why we have adopted the multi-party system? Because the social and the geographical diversity of our country, यानी कि we are having the differences socially and geographically of our country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. यानी कि हमारी कंट्री इतनी सोशली और जोग्राफिकली डाइवर्सिटी है, अलग है, विभिन्नता है इसके अंदर कि हम 2 और 3 पार्टी से हमारी कंट्री का काम नहीं चल सकता है, यानी कि हम प्रॉपरली गवर्नमेंट नहीं बना सकते. एंड the social and geographical diversity of our country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. So no particular system is ideal for all countries. तो हम कोई particular system नहीं कह सकते कि किस particular countries के लिए कौन सा system सही है. It depends on the social and the geographical condition. Now popular participation in political parties यानी कि how the people are taking part in the political parties. Popular participation do not enjoy much trust among the people. कहाँ पर popular participation कम है political parties का, especially in South Asia. The proportion of those who say that they are members of some political parties, कहाँ का शेयर ज़्यादा है, कह रहे हैं कि we are the members of some political parties, is higher in India. हमारी कंट्री का ये political participation comparatively जो एडवांस कंट्रीज है उनसे ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनाडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया. तो ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स यानी कि लास्ट 30 ईयर से द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु रिपोर्ट टू बी मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैज गॉन अप स्टेडली, यानी कि तेजी से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, in that we have discussed about the political party system, one party system, two party system and multi-party system, coalitions of parties, alliance, and after that we have discussed which ideal party system is better, and last popular participation in political parties कि political parties में कितना participation है. Now we will discuss about the types of political parties.